जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका बहुत स्वागत करता हूं प्रोग्राम बदलता दौर में। जैसे हर रविवार हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बात करते हैं। इस बार जो शो है इसमें आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी मुझे कि आप बजट पे अभी तक रेडियो में कुछ किया नहीं, तो बजट के बाद ये संडे है और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम बजट पर बात करेंगे। ईमानदारी से आपको बताऊं तो इसमें डिस्कशन करने लायक कुछ है नहीं। सरकार ने कोविड में जहां बजट को बढ़ाना चाहिए था, लगभग 150 करोड़ 12% की कटौती कर दी। आरपीडी एक्ट जिसकी हम मांग कर रहे हैं कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसके लिए ज़्यादा फंड दिया जाए, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। मेंटल हेल्थ पर जितनी बात होनी चाहिए उसका बिल्कुल भी जिक्र भाषण में नहीं हुआ। अभी भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 से संबोधित किया गया। कुल मिला के कुछ ऐसा है नहीं कि हम चीयर अप करें या बहुत ज्यादा डिस्कस करें। सब निराश हैं। निराश इस बात से हम ज्यादा हैं कि गवर्नमेंट इतनी इंसेंसिटिव कैसे हो सकती है, जबकि कहा जा रहा था कि हम जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए इस बार बहुत कुछ करने जा रहे हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिकमेंडेशंस थी कि तमाम लोगों के आर्टिकल मैंने पढ़े, पर्सनली बात की, सबका ये कहना था कि हमारी किसी भी रिकमेंडेशन को सरकार ने इस बार संज्ञान में लिया ही नहीं है। कहने का भाव है कि हमने रिकमेंडेशन दी या नहीं दी वो एक बराबर है। निर्मला सीतारमन जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर आए, उन्होंने अपनी बात रखी, जो किया वो किया। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट हमें इतने हल्के में क्यों ले रही है। कितनी बार हम यही कहेंगे कि हमारा वोट बैंक हम नहीं है। पिछले लगभग 30 सालों से हम एक ही आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि हमारा वोट बैंक नहीं है, सरकार को फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये हमारी एडवोकेसी की फेलियर नहीं है कि हम सरकार के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पा रहे, हमारा जो हमारी मिनिस्ट्री है वो कुछ कर नहीं पा रही है, सिर्फ लिप सर्विसिंग हो रही है। जो एडिप जैसी स्कीम में भी कटौती कर देना, जिसकी इस समय जब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जब ऑनलाइन स्कूल्स की हमने देखा कि हर जगह पे कई बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, उनके पास एक्सेसिबल डिवाइसेस नहीं है, असिस्टिव डिवाइसेस नहीं है, बावजूद उसके उसमें भी कटौती कर देना, तो ये समझ के बाहर है कि इस बार का ये बजट आया क्या है। पेंशन यूं की त्यों है, जबकि नए नए वादे किए जा रहे हैं। कई चीजों के लिए पहले बात थी कि गवर्नमेंट संज्ञान में लेगी, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तो इस पे बात करने के लिए बहुत ही वर्दी पैनल है हमारे साथ। रेनाउंड डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट, प्रेसिडेंट डॉक्टर्स विद डिसेबिलिटी, डॉक्टर सतिंदर सर। डॉक्टर सतिंदर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू दानिश जी। रेडियो उड़ान के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अनीता अय्यर मैम है हमारे साथ, फाउंडर ऑफ एकांश ट्रस्ट। अनीता मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते एंड थैंक यू सो मच। हमारे साथ डॉक्टर गिरीश सेठी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, और साथ ही साथ जर्नलिज्म में गोल्ड मेडलिस्ट हैं। गिरीश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार, स्वागत, नमस्कार, धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और कुछ ही देर में हम अनावरम सर भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो कुछ टेक्निकल कारण के साथ वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जल्दी वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो हम उनके लिए भी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सर, मैं आपसे जानना, पहले तो आपके ओपनिंग रिमार्क्स। जी दानिश जी, मेरे ओपनिंग रिमार्क्स अगर आप पूछेंगे तो जो अगर हम बड़े ही सुपरफिशियली देखें, जो टोटल एक्सपेंडिचर है सरकार ने डिसेबिलिटी सेक्टर में कितना प्रतिशत दिया है, तो वो आता है 0.04%। तो ये दिखाता है कि कितना हमारा साथ है, कितना विकास है और कितना विश्वास है। तो ओपनिंग कमेंट्स में मैं यही कहूँगा कि द डिवाइन पीपल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड येट अगेन टू बी आत्मनिर्भर ऑन देयर ओन। मैसेज बड़ा क्लियर है सरकार की तरफ से। आप पूजने लायक हैं, आप दिव्यांग हैं, लेकिन आत्मनिर्भर आप अपनी तरफ से बनिए, हमारी तरफ से कोई सहयोग नहीं है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सप्लिसिट मैसेज जाता है बजट को देखकर। Were you surprised or it was pretty much on the cards? आई वॉज लिटिल बिट सरप्राइज, अगर आप मुझे ऑनेस्टली पूछें, क्योंकि यूजुअली लिप सर्विस तो हर बार होती है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये जुमले मारे देते हैं,
बट इस साल तो इन्होंने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए अगर आप देखें, क्योंकि पूरे 2 घंटे की स्पीच दी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने, जहाँ पर कहीं पर भी पीपल विद डिसेबिलिटी और मेंटल हेल्थ का, जबकि कोविड-19 के बाद एज ए डॉक्टर ऑल्सो आई कैन वाउच फॉर दैट कि सभी लोग बोल रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इलनेस इज द नेक्स्ट पेंडेमिक ऑन द होराइजन। तो उसके बाद भी, इतना लॉकडाउन के बाद भी, अगर आपका कहीं 2 घंटे की स्पीच में कहीं मेंशन नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्पीच में मेंशन नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप देखें कि कोविड की वजह से जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा ड्रास्टिकली अफेक्टेड हुई है, वो है पीपल विद डिसेबिलिटीज़ की। लेकिन आप देखिए हर सेक्शन में आप देखेंगे देयर इज़ ए ह्यूज रिडक्शन। सो देयर वाज वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज अगर आप कोविड के बाद भी आप अगर हमारी बातें नहीं करेंगे, हमारी समस्याओं को नहीं सुलझाएंगे, तो वो वक्त कब आएगा, वो सुबह कब आएगी? आई एम श्योर मेरा ये जो शो है आज का, ये पूरा डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट को जाएगा और तमाम हमारे जो कमिश्नर्स हैं या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसे सुनेंगे। और मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं कि डिपार्टमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी क्या है, एफर्ट्स क्या है? आई मीन हाउ कैन यू इवन जस्टिफाई? क्या आप सिंपली ये बताना चाहते हो कि यू आर कंप्लीटली पपेट, यू हैव नो से, देन अबॉलिश दिस डिपार्टमेंट? आप कुछ भी नहीं करवा पाए। मतलब कोविड में सबसे ज्यादा जो ड्रास्टिकली इस कम्युनिटी को अफेक्ट किया है, आपने 150 करोड़ रुपया उसका कट कर दिया 12%। अरे भाई कम से कम उतना तो रखते। एनीवेज, अनीता मैम, योर ओपनिंग रिमार्क्स। Thank you, Danish. Honestly, I would like to reserve my remarks until later, because my question is always what have we managed to do with the budgets that we were given earlier. Pehle jo budget, when I'm looking at the history of articles regarding the different budgets over the past few years, yahi dikh ke aa raha hai ki the disability community has not been very satisfied with the budgets that were allocated towards bettering the lives of people with disabilities in different ways, mental health ho ya physical challenges ho. So there has not been any satisfaction in the past few years. So my question really is that if there is a department for justice and empowerment for people with disabilities, why is that department not raising its voice? Who are the people in that department, and what is their role really? Like you're saying, should we just close down that department if it is not functioning at all? Because if they are representing people with disabilities and not just the government, then they should speak on behalf of the people that they are claiming to represent. And I think there should be a big demand for the right advisors for this government. I will repeat myself every single time in every interview. I think we are in need of better advisors for this government. I think there might be good intentions that are going wrong. I would still like to keep my faith with this government, because वो cliched जो line है, at least they are trying, but ठीक से नहीं try कर पा रहे, implement नहीं हो पा रहा है. So I definitely feel that they need better advisors. That has been my impression right from the start. Right. अब इन्होंने सेंटर फॉर सपोर्ट जो डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है उसका भी कम कर दिया। एक तरफ आप कहते हो कि स्वस्थ रहने के लिए हम खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, खेल इंडिया हमने शुरू किया है, हमने कई कुछ किया है। डॉक्टर गिरीश, आपके ओपनिंग कमेंट्स। ये जहां तक माननीय वित्त मंत्री जी ने जहां आम लोगों के लिए एक जो बजट में प्रावधान किए हैं जिसमें टैक्स स्ट्रक्चर को नहीं छुआ और बोरिंग पे डिपेंड किया है, जहां तक हम लोग हैं जो कि जिन्हें दिव्यांग कहा जाता है, इसके लिए बड़ा उदासीन बजट है। और उदासीन मैं इसलिए भी कहूंगा कि चलिए आपने हमें इम्पेटस नहीं दिया, हमें ग्रांट नहीं दिया, लेकिन जो पिछले वर्ष हमें एलोकेटेड ग्रांट थी, जैसे कि हमारे स्कीम्स के लिए था 12%, यानी आपका जो है 153.62 करोड़ कम किया गया है, 13.25 से लेकर 11.77 कर दिया गया है। तो जो पहले हम एलोकेट हो रखा था, नहीं आपने तो ग्राफ को ही डाउन स्लाइड कर दिया है, यानी चलिए आप हमें और पैसा नहीं दे रहे हैं, पर जो पैसा था उसको भी कम कर दिया गया है। तो ये समझ के बाहर है कि आप एक बारी आप
जहां तक दिव्यांगों की बात करते हैं, उनको आप इम्पेटस, डिपार्टमेंट को इम्पेटस देने की बात करते हैं, अगर आप पूरी फिगर्स उठा के देख लीजिए, पूरा चार्ट उठा के देख लीजिए, तो जो पिछले वर्ष जो एलोकेशन हुआ था डिपार्टमेंट बजट में, उस और इस वर्ष के बजट का एक तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कम कर दिया गया है, यानी डाउन स्लाइड, ग्राफ डाउन जा रहा है। ये एक बड़ी चिंतागत बात है। आप पैसा ना दें, पैसा बढ़ाएं ना आए, वो भी एक घड़ी समझ आता है, वो भी बात उचित नहीं होगी, लेकिन आप पैसा कम कर रहे हैं जबकि विकलांग लोग बढ़ते जा रहे हैं और पैसा कम होता जा रहा है। ये एक जो है, ये लॉजिक या ये तर्क समझ से बाहर है। जहां आपने 94,000 करोड़ से जो है आपने हेल्थ को जो है लगभग 2,23,846 करोड़ कर दिया, और आपने 138% की बढ़ोतरी कर दी, और 35,000 करोड़ आपने जो वैक्सीन पे कर दिया, उसमें विकलांगों के लिए क्या किया? क्या आपने डिक्लेयर किया कि इनको आप मुफ्त वैक्सीन दिलाएंगे? तो कहीं ना कहीं एक उदासीन रवैया है, ना केवल उदासीन, और जैसा कि अनीता मैडम ने बिल्कुल ठीक कहा कि गवर्नमेंट मशीनरी में जो टेक्नोक्रेट बैठे हैं, क्या हम लोग वोट बैंक नहीं है इसलिए हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता? ऐसा क्यों है? माननीय वित्त मंत्री इस चीज को क्यों नहीं एड्रेस करी, और हमारे जो टेक्नोक्रेट्स बैठे हैं डिपार्टमेंट में, वो इस विषय में क्यों नहीं लाते? यानी मेरे को चिंता हमें इस बात की है कि आपने पैसा नहीं दिया, ठीक है, आपने पैसा नहीं बढ़ाया, वो भी एक घड़ी, लेकिन जो पैसा आपने पिछली बार दिया गया था उसको भी आपने कम कर दिया है। कि कितना चिंताजनक विषय है। यानी आप एक तरफ तो हमें ब्रांड कर रहे हैं, दिव्यांग हैं, ठीक है, हम आपकी भावनाओं के सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमें हमारा सम्मान से नहीं होगा, हमें जो है आत्मनिर्भर बताइए। नेशनल हैंडीकैप जो फाइनेंस कमीशन है उसमें पैसा कम कर दिया गया है। तो मतलब एक और चीज में बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाऊंगा, उसके बाद आदरणीय सदस्य बोले ये मैं सुनूंगा उनके। आप डिसइन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जहां आपने 49% से एफडीआई 74%, यानी आपने बिल्कुल प्राइवेटाइज कर दिया इंश्योरेंस सेक्टर में। उसमें आपने जो विकलांग लोग काम कर रहे हैं उनके लिए क्या कवर प्रोवाइड किया है? क्या उनको वो आरक्षण मिलेगा? मान लीजिए प्राइवेट फर्म अगर उसको टेक ओवर करती है तो क्या वो विकलांगों को, प्राइवेट सेक्टर में तो अभी आरक्षण है नहीं विकलांगों के लिए। तो ये कुछ मुद्दे हैं जहां एम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत चिंतागत स्थिति होती जा रही है। डॉक्टर सतेंद्र जी, दो बातें। एक, लोगों जो फॉलोअर्स होते हैं ना, इरेशनल फॉलोअर्स, उनका एक तर्क है। दो चीजें समझ आई है अभी। एक, अनीता मैडम ने कहा कि अभी पहले भी जो डिसेबल्ड कम्युनिटी थी वो ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी, तो कोई नई बात नहीं है इस बार में और पुरानी बातों में, क्योंकि वो तो हर बार यही कहते हैं कि हम वी आर नॉट सेटिस्फाइड। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो फॉलोअर्स में बोला, इरेशनल जो बातें हो रही हैं कि भाई हेल्थ सेक्टर में अगर पैसा लगाया सरकार ने, बजट बढ़ाया, वो तो सबके लिए है, उसमें डिसेबल्ड भी आते हैं। अगर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना रही है तो वो भी सबके लिए है। देन व्हाई दिस हू एंड क्राई? नहीं, may I please interrupt because I have been misinterpreted. मेरा कहने का मतलब है कि the budget has been less than satisfactory over the past few years, and this point has been picked up by the disability sector time and again. That was my point. हाँ, मैं वही बोल रहा था, मैं भी वही बोल रहा था। Yeah, right. Thank you. जी जी डॉक्टर साहब। Yeah, thank you दानिश जी for this very apt question, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा है ये बड़ा ही वाजिब सवाल है। क्योंकि अगर आप देखिए मीडिया रिपोर्ट्स भी अगर देखिए इस बजट की, डिसेबिलिटी बजट स्पेसिफिकली की, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। यू विल फाइंड एट सम प्लेसेस उन्होंने लिखा हुआ है कि डिसेबिलिटी सेक्टर गेन दिस मच ऑफ बजट। तो जो रिपोर्टिंग हुई है, जो नंबरों से जो खिलवाड़ किया जाता है, ट्विस्टिंग ऑफ द फिगर्स, वो ऐसे हुई है कि जो अगर आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के दो सेपरेट डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट और दूसरा सोशल जस्टिस। आप दोनों का बजट मिला दीजिए और एक न्यूज़ आर्टिकल छाप दीजिए तो बजट बढ़ गया है। दूसरी बात है, नंबर्स को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि जो नंबर भी आ गए हैं अल्टीमेटली, तो जैसे अनीता जी ने भी कहा था कि उनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एक्चुअल यूटिलाइजेशन क्या है, एक्चुअल नंबर्स हैं क्या। तो इसका कॉमन सा मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि अगर आप बजट देखिए, मेंटल हेल्थ की हमने बात की कि ओपनिंग स्पीच में ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कोई बात ही नहीं की इसकी, लेकिन आप बजट देखिए 600 करोड़ मिले हैं पूरे मेंटल हेल्थ को। 597 करोड़ हैज बीन गिवन फॉर मेंटल हेल्थ, बजट एलोकेशन फॉर मेंटल हेल्थ। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए। जो 600 करोड़ दिए हैं मेंटल हेल्थ के लिए, उसमें से आपके 500 करोड़ सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन जो कि निम्हांस है उसको गए हैं आउट ऑफ 597। बचे हुए 57 करोड़ गए हैं आपके रीजनल इंस्टीट्यूट
तेजपुर में। इन सब के बाद जो बचता है वो आता है 40 करोड़, वो सिर्फ आपका नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए हैं, जो कि पूरे मेंटल हेल्थ बजट का जो नंबर आया आंकड़ा 597, उसका मात्र 6.7% है। तो एक एक तरफ तो आप देखते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो लेटर पे लेटर इशू कर रही है कि आप जितने भी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो आप उनको रिव्यू करें, उनका बजट कट डाउन करिए, हमें आत्मनिर्भर बनाए, वो उनको अपने अपने पूरे का पूरा देखिए कि बजटरी एलोकेशन कहाँ हो रहा है। दूसरी तरफ आप सिर्फ इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड कर रहे हो, जबकि आपका फोकस होना चाहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट के ऊपर। राइट। डिसेबिलिटी एम्पावरमेंट अगर हमारा जो डिपार्टमेंट है उसी की बात करें तो उसका खुद का एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ, सीहोर मध्य प्रदेश में, जिसकी बिल्डिंग में भी बनी नहीं है। कोविड-19 के बाद क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि आप उसको स्ट्रेंथन करें? उसको कितना एलोकेशन हुआ, बजटरी एलोकेशन? 0। तो आप निम्हांस दो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को आप पैसे पूरे के पूरे बजटरी एलोकेट कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, डीईपीडी में आप क्या कर रहे हो कि जो आपके नेशनल इंस्टीट्यूट आप उनको क्लब कर रहे हो, सारे के सारे उनको क्लस्टर्स को कर रहे हो कि नहीं हमें अपना क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ऑर्डर आया, हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो आप इनको क्लब करो, इन सब के काम एक जैसे हैं। तो इज़ इट जस्टिफाइड? तो ये सारा का सारा अगर नंबरों का खेल आप देखें, जो हमारा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट भी आया है उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको सेंट्रल और स्टेट मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड और मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बनानी है। कितने स्टेट्स में बनी है अभी तक? आरपीडी एक्ट की जो बात होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन का रोड मैप कहाँ पर है? कहीं है? कोई रोड मैप नहीं है। अगर हम ये कहें कि ये सारी चीज़ें ऊपर से आई या फाइनेंस मिनिस्ट्री से, एज यूजुअल डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, इट इज़ ए नॉन ग्लैमरस डिपार्टमेंट, कम वैल्यू है, पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पे देखा जाता है। तो आई वुड डिसएग्री अगेन। जो अगर आप देखें नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ रिहेबिलिटेशन साइंस एंड डिसेबिलिटी स्टडीज़, वो अभी सिर्फ बिल है, अभी तक बनी नहीं है, पारित नहीं हुआ है। इस बिल में जो स्कोप है नेशनल यूनिवर्सिटी का, उसके लिए बजटरी एलोकेशन ऑलरेडी हो गया है 0.01 करोड़। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि देयर इज नो से ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। दे आर क्लबिंग दीज नेशनल इंस्टीट्यूट्स, दे कैन पुट देयर फुट फॉरवर्ड कि नहीं हमें नहीं करना है। 11% आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा ही है कि जो बजट है पूरे डिपार्टमेंट का पूरा स्लैश डाउन हो गया है। बात करते हैं सुगम्य भारत अभियान की। सुगम्य भारत अभियान के लिए क्या कभी भी सेपरेट बजटरी एलोकेशन हुआ है? आज तक कभी नहीं हुआ है। जब आप प्रधानमंत्री का जो ब्रेन चाइल्ड है एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, उसके लिए पैसा आप शंटिंग करते हो पुराने 1995 एक्ट की स्कीम, सिपडा स्कीम फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसेबिलिटीज एक्ट 1995, तो ये शो करता है कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। दूसरा, कितना यूटिलाइजेशन है। पहली बात तो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है जो सुगम्य भारत अभियान भारत की बात ही नहीं करता, कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ की बात करता है, क्योंकि 69.9% डिसेबल्ड लोग, विकलांग लोग गाँवों में रहते हैं, रूरल एरियाज, विलेजेस आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन। फिर जोर शोर से बात होती है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। क्या आपने आर्किटेक्चर देखा पूरा राम मंदिर का? क्या वो सुगम्य है? बिल्कुल नहीं है। 2 दिन पहले 2 फरवरी 2021 को यूपी गवर्नमेंट लेटर इशू करती है कि हमने 4 अक्टूबर 2018, 18 दिसंबर 2020 को लेटर्स निकाले हैं कि सारी चीज़ें सुगम्य होंगी, तो उसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो फिर ऐसे स्ट्रक्चर्स क्यों बन के आ रहे हैं राम मंदिर जैसे, जो कि देखने से ही सुगम्य नहीं लग रहे? तो हम ये सारी बातें, ये सारे जुमले क्या पेपरों पे रहेंगे कि आत्मनिर्भर भी हैं हम, दिव्यांग भी हैं हम, प्रधानमंत्री का कैंपेन अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे तो हम बाकी क्या बात करेंगे डिसेबिलिटी सेक्टर में? एग्जैक्टली, आई विल कम ऑन दैट। अन्नावरम सर ने भी शायद ज्वाइन कर लिया। अन्नावरम सर, है आप हमारे साथ? अन्नावरम सर, आप हैं हमारे साथ? ओके। अनीता मैम, डॉक्टर साहब ने बहुत डिटेल में जी। दानिश जी, मैं हूँ, सॉरी। वेलकम वेलकम, बहुत स्वागत है आपका जी। आपने सुना डॉक्टर साहब को, तो चलिए आप पहले अपने ओपनिंग रिमार्क्स दीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर दैट दानिश जी। मैं ये बात बोलने दीजिए, तो डिसेबिलिटी के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा ही, बट आई हैव बीन वाचिंग द यूनियन बजट फॉर द लास्ट 20 years as a student, as somebody who has been teaching. सबसे ऊपर उठ के मैं ये कहना जरूर चाहता हूँ, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट disappointing budget presentations I have watched so far.
Not for any other political reasons. I have no reasons to go there. Partly because this is one of those, probably for the first time in independent India, you have seen the government of India making allocations to sell the government assets. It is one thing to sell your assets, but you make allocations to incentivize people who should buy these assets. So I think we can understand the direction of the budget from there. So I think, but that's very important because we haven't seen privatization has been happening for many years. I mean, we have no dispute for that. But the kind of privatization that has been proposed in this budget would be irrevocable. I don't think any other government, even after many years, will ever be able to reverse this. This is a very, very disappointing trend. But of course, that will be reflected, as Dr. Saab was saying, all the statistics he brought. I don't think we have to re-emphasize them again. But all those statistical data is a reflection of the government overall direction, and that is pretty much available. I think I'll comment on some of that form maybe in the subsequent phase, but quite disappointing. Yeah. जी अनीता मैम, दो चीजें आपसे समझना चाहता हूँ. एक, जब गवर्नमेंट कहती है कि हम आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं सबको, तो गवर्नमेंट पहले 20 लाख करोड़ का पैकेज लेके आए, वो दैट वाज ऑल अबाउट लोन्स. फिर भी गवर्नमेंट मुद्रा लोन या सब लोन. अब हमारा एक डिपार्टमेंट है NHFDC, आपने उसका पैसा भी कम कर दिया. अगर आप लोन जो लेते थे आपने उसमें भी भारी कटौती कर दी. एक जो गवर्नमेंट है वो ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन प्रोग्राम है, आपने उसका भी बजट कम कर दिया. तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या है, व्हाट इज द व्हाट दे आर थिंकिंग. इस पे आपके क्या व्यूज हैं? I will reiterate that we need representatives from the sector in the government. While it is nice to have IAS officers heading these departments, they are not sensitized, they are not educated about the situations that are faced by people with disabilities around the country. What are the basic qualifications required for being in that particular department and to be decision makers? ये किस हैसियत से या किस academic qualifications के basis पर ये सारे decisions लिए जा रहे हैं? पहली बात. पहले भी जो allocate हुए हैं funds, ये किस तरह से use किए गए थे? Accessible India campaign जब चली थी, I was one of the access auditors. Like I told you in the last interview, I did not do any access audits at all under the Accessible India campaign because I didn't understand the basic premise of it at all. तो मैं दूर रही उससे, although I was empaneled. मेरा सवाल ये है कि ये rules बना कौन रहा है? Who are the people that are feeding information to the the Honorable Finance Minister? Who are the people that are taking back this information to the government? And in what form is this finally reaching the government? ये बहुत जरूरी है जानना. कौन है ये लोग जो आपके ये जो सारे मुद्दे आप लोग उठा रहे हो? Why I say आप is because I don't belong to the community of people with disabilities formally. So when I'm saying when people with disabilities, a community is raising so many valid questions, who is representing them in the government? And is there a consensus? एक और बात है इंडिया में, we all know that all people who are representing, the community don't really agree on all issues. But if there could be a brainstorming, if people could come together, create one single document and send it to the government of India, it will carry a lot of weight. So who is guiding the government at all? ये मेरा सवाल हमेशा रहेगा कि इनको guide कौन कर रहा है? From the listing of those 21 disabilities to the allocation of funds, to the people who are heading the different departments in different states. Who are these people? Like Dr. Satyendra Singh said, why isn't accessibility in rural areas even being considered? That is the first place where we should bring accessibility, not just physical accessibility to spaces, but also access to education, access to information. When all of this is being denied, क्या रिप्रेजेंटेशन हो सकता है? अभी भी आप देखो तो बहुत ही एलीट पीपल बैठ के बात कर रहे हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, कॉलेज तक पहुंचे हैं, पढ़े लिखे हैं.
इनके बीच में ही बात हो रही है. रूरल सेक्टर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? It's very important that we bring them also into the conversation. Also, women with disabilities in the COVID period, mothers with disabilities, daughters with disabilities. There are horror stories that I can relate about what is going on right now. Transgender, not at all represented in the disability community as far as I know. What is going on? So there is a lot that needs to be spoken about. We need proper representation in the government. Jab tak wo nahi hoga, it is persons who are really unconcerned and uninformed who are making these decisions for the community. And as long as this happens, things will go wrong. We have to fight for proper representation in the government from the community. Right. मैं इससे पहले डॉक्टर गिरीश सेठी के पास जाऊं, मैं अन्नावरम सर और सतेंद्र सर को एक बार लाना चाहता हूं डिस्कशन में वापस. डॉक्टर सतेंद्र जी और अन्नावरम सर. डॉक्टर सतेंद्र, मैं ये वैलिड पॉइंट है अनीता मैम का. हम लोग जितने भी आपस में देख रहे हैं, जितने डिसेबिलिटी एक्टिविस्ट हैं अक्रॉस इंडिया, ऑलमोस्ट देयर इज ए कंसेंसस. बजट के ऊपर भी एवरीबॉडी हैज कंडेम्ड. देन गलत क्या जाता है हर बार? व्हाट वेंट रॉन्ग? हम व्हाई वी आर नॉट हर्ड? द पॉइंट इज, जब सभी का कंसेंसस है, गवर्नमेंट कहती है कि हम हमेशा डिसेबिलिटी से, जो डिसेबिलिटी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करते हैं. हु these stakeholders are? That's why we fail to do advocacy. Then when all the major organization, strong individual leaders, they are on the same page. Dr. Saab. Well, Danish, that's an Achilles heel of medicine में बोलते हैं, Achilles tendon जो एक युक्ति है. ऐसा नहीं है कि ये डिसेबल्ड लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं है. अगर आप देखें तो ऑन पेपर्स भी नहीं, वैसे भी अगर आप देखें तो कानून में है कि देयर विल बी अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी. जो पहला जो बना था बोर्ड, उनका 3 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है. उसमें रिप्रेजेंटेशन अगर देखा जाए तो है हर डिसेबिलिटी से. तो दीज ऑल आर पीपल फ्रॉम आवर ओन सेक्टर, आवर कलीग्स, दे आर ऑलरेडी देयर. बाकी कमिटीज़ में भी कई बार आप देखते हो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन है, बट अल्टीमेटली वेदर दे आर able to convince the government in those meetings or not, that remains the big issues. How assertive they are, that is a big question. And the second thing is that I think the main reason is that we don't have any political representation, to be honest. अल्टीमेटली जो रूल्स बनते हैं, कानून बनता तो पार्लियामेंट में ही है. पार्लियामेंट में आप मेरे को दिखाइए कहाँ पर हैं, वेयर आर द लीडर्स विद डिसेबिलिटीज. इवन फॉरगेट अबाउट लोकसभा, राज्यसभा देख लीजिए, राष्ट्रपति जी हमारे हर बार नॉमिनेट करते हैं. देयर आर फिल्म एक्टर्स, देयर आर क्रिकेट प्लेयर्स, देयर आर म्यूजिशियंस, देयर आर आर्टिस्ट फ्रॉम ऑल द फील्ड, देयर आर डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल द फील्ड्स. But where are these the role models with disabilities? Why not the Honorable President of India appoint somebody from the disability sector? It is not that there are no celebrities with disabilities belonging to all of these fields. आपको हर फील्ड में एक मिलेगा. हर साल नेशनल अवार्ड दिए जाते हैं, हर साल लोगों को दिया जाता है, ऑनर किया जाता है, बट उसके बाद कहाँ जाते हैं वो? उनसे काम क्यों नहीं लिया जाता? उनको आप क्यों नहीं इन्वॉल्व करते हो? क्यों आप उन्हीं लोगों को अपने सर्कल में रखते हो जो यस सर यस मैडम वाले लोग होते हैं? I think that is the key. That remains the key. You need people who can openly share their opinion, and and those voices needs to be heard. And that is the problem. And moreover, it is usually a Delhi centric voice. अगर आप committees में भी देखिए, representation कहाँ से होते हैं आपको मिलेंगे? आधे से ज़्यादा 90% people are from the Delhi, speaking good English, educated, right? What about Southern India? उनका कहीं representation कहीं होता ही नहीं है. जो सर्कुलर पे जाते हैं एनजीओज को भी, वो भी बड़े चूज एंड पिक करके वो भेजते हैं कि यूजुअली मेजॉरिटी आर फ्रॉम द दिल्ली. So that's the problem that there is no geographical representation, there are no involvement of people who are passionate about these issues. And the most important thing is, of course, we need a political representation. Why it is not there? In fact, political parties they should start giving reservations. All the major political parties, probably that could bring a change. अन्नावरम सर. जी, representation तो है ही नहीं. That's a forgone story. We don't have a representation. But what's also important is
I think let me say this, whom the government is listening to, at least when it comes to the budget. The frank story is the only people the finance ministry listens to, dies to listen to, is the industrialists. That's a fact. They don't listen to any welfare beneficiary groups. Though there may be people who most of the time sending representations and the stuff, but the fact is the finance ministry makes it a point actually to sit with the industrial groups. The only people whose concerns most of the time who are directly represented, listened to before the budget, I'm specifically talking about the budget, are the industrialist groups. So that's but then the question is, if that is the case, the budget also in most of the times fulfills the interests of several other groups, but how are they then those representations, those groups are successful enough to get represented? Say for example, the textile workers, the fishermen, last time the focus was fisher folk, the handloom workers. The fact is it all comes from the political sensitivity of different parties. Not, when I say political sensitivity, not necessary that members belonging to those communities saying up things, but I think there is a political calculation before every budget. Whom do you really want to highlight? That doesn't necessarily come from ontological representation, if you want to call it, people themselves. So these are highlighted by the political parties. In the sense, the political parties start taking them seriously. It could be women, can be the fishermen, could be sometimes the farmers of different groups. When I say the different crop producing farmers, so on and so forth. Unfortunately, what you really find therefore in the budgets is a complete lack of, I'm not saying representation, but complete lack of political sensitivity to the issues of disability. And that's a very straightforward thing. It's not about representation. But how long we will cry for that? I mean, exactly. So what we are learning? Then we are not learning anything. We make hue and cry right after any incident happens. We don't speak before. So, we always speak after, and that brings no result. Very rarely. One thing we have been saying, at least a small group of us, is please, it's a time that we start engaging with political leaders, not necessarily ministers, but leaders of different political parties. Unless and until in a democracy, we sensitize the political parties, we will not be able to achieve much of the things. So I think we have to talk to the political parties, both in the opposition and the ruling. And at least that's the only hope, because I don't think we're going to have a political representation anytime soon. Okay. So what is the way out? The way out is to at least keep talking to these guys and see if we can reach somewhere. Right. Okay, I will come back. डॉक्टर गिरीश, आपने सुना डॉक्टर सत्येंद्र जी को भी और अन्नाब्रह्म सर को भी, तो व्हाट यू वुड सजेस्ट अस? रूरल इंडिया की नो रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, but this is what we keep repeating. Dr. Ghari said, we have so many people in the committees, as Satinder sir pointed, but we never found in the minutes anyone from the committees has raised their voice or उन्होंने कोई असहमति जताई हो उसमें कि नहीं सर ये होना चाहिए. We never found. Look, cutting across political party line, let me say one thing, Danish sir. There are so many organizations and society that cater to the needs of people who are disabled. But why can't we have one strong organization of disabled to which government can engage and have because there's so many. I know we are on the same page. I agree with what अनिता मैंने कहा, हम एक पर हमारा एक सशक्त पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो पा रहा, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है. और जहां तक हमारा जब आपकी बात बिल्कुल सही है, जब रूरल मासेस तक अवेयरनेस ही नहीं होगी तो पहुंचेगा. एक उस अवेयरनेस कैंपेन ही नहीं है, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, तो वो इस पे क्या अपना विचार देंगे? When people are not aware about their rights, how can they go to advocate what they want actually?
So we need a strong, first of all, we need to get our house in order, that in the sense, with due respect to everybody, with no offense, I mean, we need to have a one strong body of disabled representing various sectors of disability, and that could engage the concerned people in the government. Instead of being a scattered organization, there are many strong organizations, but why can't we have one umbrella organization that could have that could engage with the various stakeholders? That's what my humble submission is. Right. Look, my concern is, Daneshji, my concern is, I mean, there in every in coming time there will be disinvestment, there will be privatization. I mean, people who are government were getting, I mean, this is going to hurt the employment sector for handicaps actually. Why? Because reservation is not limited, is only limited to the government sector. Another aspect which I would like to raise is, there is minimum or almost zero participation of people with disability in the decision-making process. As rightly said by Anita Madam, as rightly said by the other honorable panelists. I mean, we have to get ourselves strongly heard actually. Let's not put, I agree, let's not put everything on the onus on the government. And there should be representation, and that can only be done when we make our voice heard. And when we can make our voice, we have to come under one umbrella, one strong, or whatever we can engage. And then let's see how it comes out. But at present, things do not look too rosy. Right. Anita मैम, हमारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं. अगर फंड हम देख रहे हैं, एक पैटर्न चल रहा है कि जो फंड अगर एलोकेट होता भी है डिपार्टमेंट को, वो हैंडफुल ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल के पास जाता है. इट इज़ देयर ऑन द रिकॉर्ड, वेबसाइट पे लिस्ट है डोनर्स की, वही लोग हैं जिनको जाता है. बजट आता है तो कुछ लोग ले जाते हैं, बजट कट हो जाता है. हम जो शोर मचाते हैं, हम अपनी बात रखते हैं इवेंट होने के बाद. डू यू थिंक इट इज अवर एडवोकेसी फेलियर? जब हम सारी चीजें हमें पता है, वी आर टॉकिंग, बट वी वेट फॉर द इवेंट. बजट आ रहा है तो अब हम बातें कर रहे हैं इससे रिलेटेड, जबकि ये पूरे साल का इशू है कि फंड्स हैव नॉट बीन यूज्ड इन अ प्रॉपर मैनर. What are the solutions? What is your take on it? जी, see, एकांश का जो मेरे ट्रस्ट का जो लोगो है, उस पे I have mentioned a sort of a journey, which is awareness, acceptance, sensitization, and then inclusion. Basic lack of awareness is a fact. Awareness on many levels. What is hurting us now is the fact that people without disabilities who are in the government are not able to understand persons with disabilities and their issues. But also within the disability community, what I have learned, see, everything that I'm putting forward here, I'm putting forward very humbly and from the experience that I have, although I'm a person without a disability, from the 13 years that I have been working in this sector, more than 13 years, but 13 years formally. Okay, so I hope that all of you will take it in that spirit. It is not to condemn or criticize, it is only to make suggestions. The first point is, when we are working in the rural sections and in the slums of the cities, we find that people don't even know what their rights are, what schemes are available, what a disability is. And if people with disabilities are there, they are not even registered, they are not in the census at all. So we do not even have numbers, correct numbers of persons with disability in our country. One is lack of awareness, two is stigma, and three is apathy. Okay, so when we go into rural places, we find that basic जो awareness होना चाहिए कि basic prevention, detection, early intervention यही missing है. एक इंसान की जिंदगी में there are phases, right? There is birth, then there is infancy, then there is childhood, then there is youth, then there is middle age, and then there is old age. हर phase में we have to find empowerment for everybody, whether it is people with disabilities, people from the transgender community, women, farmers, everybody requires to be empowered so that we have an empowered nation. Now, if there is no awareness, if there is no education, time and again I find that when there is a fight for employment, there is a fight for money, for entrepreneurship, etc. Whereas I would like the focus to be
on basic education and skilling of persons with disabilities first. पहले तो acknowledgement that there is a disability. 2 is वो होने के बाद education कहाँ पर है. जब हम reservations के through लोगों को jobs दिलाते हैं, there will always be a compromise in the quality of work that is done. We want people to be employed because of the abilities that they have. The disability should not be a consideration at all, as long as a person can deliver good work at the office or at the position that he is holding. It does not matter if he has a disability. The disability should not be considered at all, as long as he can efficiently work. He, she, person from a transgender community, if they can work, then we should not be looking at anything else except their efficiency. या इस बात पे जोर नहीं दिया जा रहा है. इंक्लूसिव एजुकेशन की बात मैं भी करती थी, लेकिन इंटीग्रेटेड इस बात पे जिक्र इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि क्या आपको लगता है कि लोगों का एटीट्यूड इंडिया में ऐसा है कि एबिलिटी देख के दें? देखिए, जब तक एबिलिटी हम डेवलप करेंगे, बात अगर हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की करेंगे, एबिलिटी डेवलपमेंट पर भी हमें जोर देना है. मैं एक मिनट माफी चाहूंगा, बीच में एक बात कहना चाहूंगा, इस माफी चाहूंगा, लेकिन एक इंडिया के अंदर एक माइंडसेट है कि लोगों में बहुत डिसबिलीव है डिसेबल्स की एबिलिटी को लेकर. उनकी एबिलिटी, उनकी डिसेबिलिटी को देखा जाता है ना कि उनकी एबिलिटी को देखा जाता है. या मैं तो समझती हूं आपकी बात, मैं वहीं पे आ रही हूं मैडम, या तो उनको सिंपैथेटिक आई से देखा जाएगा. I think we are debating. No, we are not debating. I'm just putting forward a point that there should be a budget even for education and skilling of persons with disability. And when we talk about representation, it should be informed, educated representation, not opinions that are going to the government of India, but actual representation of facts must happen. For this, the team that comes together should have qualified people who are chartered accountants, lawyers, people who understand the subject well and are able to actually analyze it, all from the disability community. That should be a solid group that is formed. There should be a big movement towards forming a group of representatives that are then, possibly you can have a parallel election of those representatives in that particular group that then talks to the government on behalf of the community. You need that solid, cohesive group which represents you. And people who are not from the disability community can be brought in as advisors or as supporters in whatever position you want to see them. You can bring them in for the support you need. But the core group has to be persons with disabilities who have the right qualifications. See, you cannot take, for example, take a cricketer and ask him to comment about medicine, or take a person who is, a badminton player and ask him to comment about basketball. It won't make sense. Get people from that particular space and make them your representatives, so that everything that you say can go down on paper, be clear, and the representation is also clear. Then I think there is a huge lack of representation. Once you clear this particular space and you make sure that you have a group that is representing you very well, we will be able to forge ahead. I definitely believe that. Right. डॉक्टर सत्येंद्र जी, 2-3 चीजें आपसे मैं समझना चाहता हूँ. एक तो हमने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रोल. देयर इज नो डिस्कशन, देयर इज नो डिबेट, देयर आर नो न्यूज विद रिगार्ड टू दिस बजट फ्रॉम डिसेबिलिटी पर्सपेक्टिव एज यूजुअल. वहां भी हमें रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है. मीडिया टेक्स अस फॉर ग्रांटेड, वहां भी हम फेल रहते हैं. जो मैंने पहले पूछा कि हमारे, आपने कहा कि काफ़ी लोग एडवाइज़र हैं सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में या कमेटीज़ में. हमने कभी किसी मिनट्स में देखा नहीं है कि इन्होंने कभी भी किसी चीज़ पर अपने विचार रखे हो. नहीं सर, ये होना चाहिए, यहाँ ये चीज़ की ज़रूरत है. जब हम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं या किसी जगह की रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, सवाल तो यही ना सर, हाउ वुड वी ट्रस्ट. अब आप तो कह रहे हैं ना कि अभी भी एडवाइजरी बोर्ड्स में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन बावजूद उसके वो अपनी बात नहीं रख रहे. जो लोग आएंगे क्या वो बात रखेंगे, इसकी भी क्या हमें श्योरिटी है डॉक्टर साहब? ये बड़ा ट्रिकी इशू है, क्योंकि एक बात होती है कि आपसे अलग से कोई पूछा जाए आपके विचार, तो आप बड़े पैशनेट होते हैं. लेकिन जब आप एक कमेटी में बैठे होते हो जहाँ 10 लोग बैठे होते हो, तो वहाँ कई सारे साइकोलॉजिकल गेम्स भी चलते हैं कि 10 लोग आप बोल रहे हैं कि हाँ सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, आपको भी लगता है हाँ सब ठीक है. तो वही वाली चीज़ है कि ये तो डेफिनेटली आप, इसलिए दैट्स वाई यू नीड एक्सपीरियंस पीपल फ्रॉम द सेक्टर. एंड ऐसा नहीं है कि वो सारे के सारे डिसेबल लोग ही हों. मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि ओवर द ईयर्स मेरा परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हुआ है. अर्लियर आई वाज ए स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ नथिंग अबाउट अस विदाउट अस,
but still you will feel that at many places you will find disabled people who are there and they are not doing justice to their jobs. And still there are non-disabled people who are doing excellent jobs. Just like the example of, initially we were very staunch that, that commissioner should be always a person with disability. Definitely, yes. Preferably you should always have, disability representation. But then there are other people also who are equally capable, talented, knows the bureaucratic language very well. So, and who have had experience in the field. So of course you can rely on them as well. So it has to be, a sort of a joint collaboration, finding the right people. So I don't think I have a, मेरे पास कोई solution है clear cut इस चीज का कि what should be. मीडिया के ऊपर आप कमेंट करेंगे? और जो media- हैंडफुल लोगों को डोनेशन जा रही है, हम सबको मालूम है। डॉक्टर साहब, एक चीज पूछना चाहता हूँ, फिर मैं अनावरम सर को भी लाता हूँ। जब आरपीडी एक्ट में डीक्रिमिनलाइजेशन की बात हुई, तब हम लोग इकट्ठे आए, गवर्नमेंट टुक इट बैक। उसके बाद अभी रिसेंटली एनआईपीबीडी के 2 चैप्टर बंद हो रहे थे, उसके ऊपर इकट्ठे आए, एनपीआरडी का एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रहा, सारे लोग आए, गवर्नमेंट टुक इट बैक। व्हाई कांट वी बी कंसिस्टेंट विद आवर अप्रोच, विद आवर एडवोकेसी? या क्योंकि जो अभी इससे पहले आपने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भी जो बात की थी, तो मोर ऑफन देन नॉट अगर आप देखते हैं कि आई थिंक दैट इज़ अ रूट कॉज कि जो आपको अगर लोगों का माइंडसेट भी चेंज करना है, तो यू नीड एटलीस्ट सम कवरेज इन द टीवी चैनल्स। वहाँ पर 24 घंटे वो एक ही चीज़ को सुबह से शाम तक दिखाते हैं, बट देर आर इश्यूज जस्ट लाइक जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ आरपीडी एक्ट की अगर बात करें, वो उसकी कहीं कवरेज ही नहीं मिलती आपको, अपार्ट फ्रॉम जस्ट द न्यूज़ पोर्टल्स, न्यूज़ पेपर्स एंड ऑल दैट एंड फ्यू इलेक्ट्रॉनिक portals. You will not find this on TV channels. So that is why people don't see it. उनको दिखता ही नहीं है कि एक कम्युनिटी भी है vulnerable population जो कि disabled लोगों की भी है. That is also equally true for other marginalized sectors. So I think perhaps it is time we should start our own TV channel also, I think, just like that. Because at least there has to be some, you need visualization of the things which are happening, which are affecting. There were so many stories during the COVID times, but largely, disability sector was neglected. Not a single circular from Ministry of Home Affairs. इतने सारे circular lockdown के इनके निकले, किसी भी circular में vulnerable population में they never ever mentioned person with disability. In spite of representations. Despite of representation, despite of जो आप अगर देखिए disaster, national disaster program जो है, उसके chairperson is the Honorable Prime Minister of India. There is a disability inclusive disaster risk reduction guidelines, a beautiful document which was never used during the lockdown. And not a single circular is there जहाँ लिखा है कि we are the vulnerable population. And no wonder इसलिए वैक्सीन में कहीं हमारा नाम नहीं आता, because we are not vulnerable population. Anavaram sir, why we are not consistent with our advocacy approach? See, I think अपना एक शो है जिसमें मैं मन की बात पूरा रख देता हूँ, तो let me be open frank about this as well, Dinesh ji, because this is where I keep speaking up my mind most of the time. Ki, see, we are not, very rarely we are seen, or we try to become visible as a disabled group. We all want to be, most of the time, we project ourselves, our organizations project us as a group of a particular disability. Therefore, we are always small. You are either as a visually challenged group or a group representing people with mental illness and with disability and so on and so forth. Therefore, we actually we never look really as big as we think we are before the government, particularly for the last few years, a decade or so. We are increasingly polarized. Our representations are polarized, our organizations are polarized. Very rarely there has been an attempt to show the disabled as a one larger group. It's just a fact. And therefore, when our representations go, when we make our presentations felt, and I would say largely our organizations are culprit for it, but they may have different intentions for it. Therefore, we are not really visible as a person with disability group representing 21 groups. Even those disability groups, which on the face of it, at least by name, appear to be representing all disabled, actually don't represent disabled.
this somehow becomes an alibi for the government to take decisions. To each time a particular group visits, I have been part of those some of those groups. The government will speak your language, the language with which your group will be satisfied. Then other group goes and they will listen to it and they will speak in that language group. This is exactly is the problem. I think we have to have consensus on certain issues, at least something like this, where all disabled groups, irrespective of their nature and degree, should come together. And that is something that some of us want to see in our lifetime. And the attempts have been made, but they lived very short life. One I can actually recall is not really RPWD Act, but DRG, Disability Rights Group in 1994, which was a strong force, absolutely seen visible. That was a cross disability movement. I think in India, we need definitely, it's a high time that we need a cross disability group that can truly represent all disabled, that can show at least all disabled as a big group. Otherwise, the government doesn't really understand the volume or the veracity of the disabled and then their actual size, to be frank. I think that attempt is what we need. And if we can do that, I think rest of the things fall in place, be it advocacy or representation, all these can fall in place. The point is, who will bell the cat? I think it has to come. It has to come from everywhere. By the way, if somebody bells the cat is not going to wake up. The problem, because the one who bells the cat will be a single person on the ground. I think this realization has come from within each group. That's an interesting thing. Though you want to have a visible group across, I don't think that is possible unless and until each group wakes up of its limitations. If you really want to show the strength, first of all, each one of us should be ready to realize what my weakness is as of representing my own group. If you want to achieve something beyond my group interest, I think the time is to join hands with other groups, even if you don't like their ideology or some of their demands. Can we make that attempt? And that has to come from each group. More than 500 panelists told me in the show, yes, we want it. We should do it. We must do it. We must start as soon as possible. Then in the next show, same question I have to ask and same answers I have to have. Anyways, so now it's already 9:50. I think we have covered. So closing comment, aap sabhi ke. So let's start with Dr. Grisetti. Sir, as the honorable panel has said, that we need a one strong umbrella organization which can engage with the decision maker. We cannot put everything on every onus on the government. We have to get our house in order, for the sense that we have to have one strong umbrella organization representing various representations of disabled people that could engage the government. And moreover, another important thing is, why do we make a hue and cry after the spilling? I mean, why can't we have? Why do we perform autopsy? It's always better to perform autopsy. I mean, people try performing autopsy after something has happened, like budget is there. Why can't we raise our voice before, like there's a budget or there's something happened? Why can't we raise our voice before also? Before, that's what I want to put across actually. Why can't we engage the people in the government for our disability for our sector? Why should we always be ask question? We all are asking question to each other. What about our own self? That's what I'm saying. We need to get our own house in order. We cannot put all the entire onus on the government. We need to have a one strong umbrella organization where we have representatives of different organizations. Yes, agreed. People may have differences with different ideologies, but let's have a one strong ideology for that should be like catering the betterment of the disabled community on the whole. Right. That's what I believe. A strong umbrella organization, which are elected members there, and that should engage the government. We should have one strong umbrella organization. That's what I believe. Right. Thank you. Thank you so much. Anita ma'am. I'm glad that this conversation is happening, Danish. Thank you for bringing everyone together. And I'm glad that everybody's talking about representation now. It is really important.
And like I said, like Dr. Satyendra said, you should have people with and without disabilities in that group, but the face of the group has to be that of a group meant for, like you say in a democracy, of, for, and by people with disabilities. Also, supplemented or complemented by people without disabilities and whatever position they can occupy and for whatever they can bring to the table. Most definitely, it should be an inclusive group because inclusion is what we are all fighting for finally. So, Mr. Annavaram talked about what are the weaknesses of the different groups. I think we should get together on the basis of the strengths of the different groups. And I hope that this, see, Danishji, Barbar Puchra, who will build the cat, let us build the cat. There are 5 of us here. We can begin something and say, create a Google form and say, if you're interested in being a part of this group, please join us. With a question there about what are the strengths and what are the different things that you can bring to the table so that we have a very holistic approach to disabilities where we talk about everything beginning from awareness to education, employment, budget, legal and medical aid that people with disabilities are entitled to, what is the support that they need, what is it that they can offer, what can they bring to the table, how can they be empowered so that they are contributing members of society, um, what is expected initially to ensure that they are contributing members of society and respected members of society, not ignored. How can we take this into the rural areas also? A proper charted course for that particular group to follow. Why don't we begin this? Why should we wait for somebody else to do it? Why don't we get together and make a Google form and say, write to us if you want to be a part of this group that will represent us in the government, at the center, wherever, and we pass it around the country and we get voices. We may not always agree, and there should be healthy discussions and healthy arguments. It is fine. Some of us make very intelligent suggestions. Some of us sometimes make very foolish recommendations also because we are passionately involved in the whole journey. That is okay. We should be able to accept all of that and move forward together, pick the best and pick the best suggestions and take that forward and offer it to the government of India. Make sure that it is a respectable group that is cohesive. All the fights and all the arguments have to happen within the group. But as far as the government is concerned, they see one cohesive group that is putting forward valid, well-informed, well-researched suggestions to them. I think they will not be able to ignore the disability sector anymore if we can do that. Those will be my closing remarks. Thank you. Right. Thank you all. So much. Dr. Satyendra ji. अदानी जी, बजट आ गया इस साल, अगले साल फिर बजट आएगा, दोबारा से हम कन्वर्सेशन करेंगे, बट जैसे वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम. सेंट्रल बजट आया है, अभी स्टेट बजट अभी आना बाकी है. And I think what we can do initially as a small baby steps is that disability is a state subject. और जितनी भी सारी states हैं, at least we have more say in our states than at the central level. तो अभी the RPD Act, which is a very strong act in one sense as it is based on UNCRPD, उसमें कितनी सारी committees हैं, क्या हर state में वो committees बन गई हैं? I think this is something which is very important क्योंकि जो existing हम वही कर सकते हैं जो हमारे पास है. We have an existing law. There are states. We need to make put forward our foot and say in a vociferous voice that these committees which are there, they should be constituted. And I think small things will add up, and ultimately things will improve. So I don't see everything is completely dark, but we should work together and fought for these various committees which are there within the purview of RPD Act, and we should see that they are working properly. कई जगह तो स्टेट कमिश्नर्स भी नहीं है, तो आई थिंक वी हैव टू scale up our advocacy at that particular level. And may I please interrupt? And also, Satyendra ji, it would be nice if every state could share what they have put up in their own states so that others can, whatever are the best practices can be adopted by people from the community in other states as well. Yeah, I think अभी बहुत सारे कुछ states ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने rules ही नहीं बनाए हैं, state rules. So I think that is a major roadblock. But I think Vaishnavi from Disability Rights Alliance, she has created a Google Doc where she has uploaded the various state rules of various states and UTs. So I think that is one one place where you can get all of these state rules which are there. जी, thank you so much, Dr. Saab. Annavaram sir. I think let me stay with the representation, Dhanuji, but
I think we should also be very clear that another group is not an answer. Can we create a group that does not demand people to quit what they're doing? Or can there be a group that can mutually benefit each organization in its own sphere and also the larger community? One thing that comes to my mind, because thank you for insisting that what are we doing? And that's important, though some of us don't like it much. But unless and until we critically introspect ourselves, I think the answers are not going to be so easy. But one thing that I have, our experience shows, at least from, this is a tactic, you call it, or a mantra, or an experiment, that most of the time the employee organizations do. Because employees also have the same problem like us. And though the same organization, same department, same kind of employees, you have hundreds of organizations. But when there is an issue, all of them come together. They call themselves either a joint action committee or issue-based organization or something, but all leaders will come together and form a platform. And then they stand by it. I think the farmers also do the same, though they have their own divisions. But when there is an issue, all organizations come together, all the leaders will come together, and then they fight based on that particular issue. This is my personal belief that we have to bring up the issues for which everybody feels responsible about, and then bring all these leaders, and some of them are maybe the interested groups, together and convince them first about this and work as a joint alliance. Can we do that? I think that is absolutely feasible. And if not fighting, and it can also be used as a joint information sharing platform and so on and so forth. I think if we can make people taste of working together beyond their narrow group interests, I think that will be a great starting point. Why not Radioudaan start it? We'll all be absolutely for it. I think that's good. See, what I'm saying is not another organization. Let's be very clear. Or let all the organizations work for their own groups, but let all of them come together. If we can create such a platform, it can wake up twice a year or thrice a year, doesn't matter. It doesn't have to work all the time. But if such an organization comes together, I think that will be a great idea, and that is pretty much feasible. Right. Thank you so much. just the video kind permission. जल्दी हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी मैनिफेस्टोज में स्पेस देते, शुड गिव स्पेस टू आवर इश्यूज इन देयर मैनिफेस्टोज, and yes, and inclusivity should be the mantra. I agree with that. Right. Thank you so much. आप सभी का, आपने इस काफी लोगों को अवेयर किया, काफी स्टूडेंट्स को, जो हमारे लिसनर्स हैं, उनको काफी जानकारी मिली, आपने डिटेल्ड बातें रखी, अपने प्रोस्पेक्टिव रखे. थैंक यू सो मच फॉर दैट. अगले सप्ताह फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे. तब तक धन्यवाद. सुनते रहिए रेडियोडा. अगला शो बिल्कुल तैयार है. पुलकित लेके आ रहे हैं अरिजीत स्पेशल. Keep listening Radioudaan of Right or Life. Thank you so much, listener. Thank you so much, all the panelists. Thank you so much.